Welcome all members. From my side, myself Anushkan Mandal from Management System Consultancy. Today we will discuss on auditing system. Audit कैसे होता है? Audit किस basis में होता है? Audit, what way we can do the audit? So all our discussion points to this. Now, पहले हम लोग देखेंगे what is audit by definition. Systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. That is the definition of the audit. Systematic होगा, मतलब planned way में होगा, independent होगा, कोई जो skilled independent person ही उसको कर सकता है, and documented process. प्लान, उसका एग्जीक्यूशन, उसका रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में होगा फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस अगेंस्ट द क्राइटेरिया। हमको ऑडिट को फुलफिल करने के लिए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है। किस लिए? टू एवलुएट करना है ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट कि कितना हद तक मेरा ऑडिट क्राइटेरिया फुलफिल हुआ क्या नहीं हुआ। दैट टू बी कैलकुलेटेड through objective evidence. It is the definition of the audit. Now, जो बात हम लोग किए कि सिस्टमैटिक, पहले हम लोग को प्लान करना होगा ऑडिट का, ऑडिट शेड्यूल करना होगा, जो उसका हिसाब से हमको क्लाइंट को देना होगा कि दिस इज माय ऑडिट प्लानिंग। Then as per audit plan we have to execute the audit plan, क्या through evidence collection, reporting, execute करना है ऑडिट को। Then जो एविडेंस कलेक्ट किया उसी हिसाब से क्राइटेरिया वाइज हमको रिपोर्टिंग पेश करना है। देन वी हैव टू फॉरवर्ड टू आवर क्लाइंट जिसको ऑडिट करना है, जिसको किया गया है, एंड क्लाइंट विल क्लोज आउट इफ देयर इज एन ऑब्जर्वेशन, इज देयर लैकुना इन नॉन कन्फर्मिटी, दे विल क्लोज आउट डाउन इट एंड सेंड बैक टू अस फॉर क्लोज आउट। दिस इज द बेसिकली ऑडिट का। नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, if management system audit is concerned, management system audit means ISO standard आप बोल सकते हो, ISO 9001, ISO 14001, quality management system, environment management system, ISO 45001, occupational health and safety management system, और भी जो ISO standard है, उसके लिए ISO 19011 2018 version is an international standard for provides guidelines for auditing management systems. It outlines the principles of auditing, managing audit programs, and conducting management system audits. बाकी ऑडिट भी बहुत सारा ऑडिट टाइप्स ऑफ ऑडिट है। फाइनेंशियल ऑडिट बोल सकते हो, आप सेफ्टी ऑडिट बोल सकते हो, फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, बहुत सारा ऑडिट और भी है। उस केस में क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड जो स्टैट्यूट स्टैंडर्ड हो सकता है, उसका रिलेटेड स्टैंडर्ड अलग हो सकता है। मगर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के लिए 19011 2018 इज एप्लीकेबल। टाइप्स ऑफ ऑडिट, किस किस टाइप का ऑडिट होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट बेसिकली, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट इज बेसिकली इंटरनल ऑडिट, मींस इंटर डिपार्टमेंट, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का नहीं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्टी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिटर टीम जगह फंक्शन टू फंक्शन ऑडिट करके रिपोर्टिंग करेगा, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल ऑडिट और फर्स्ट पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या है कि सप्लायर ऑडिट, बेसिकली जो आपका रिलेटेड सप्लायर जो है, उस सप्लायर का आप जब ऑडिट कर रहे हो, कोई भी एंगल से हो सकता है, आपका फुलफिल कैपेसिटी है क्या नहीं है आपका फुलफिल करने का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस के है, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्थ सेफ्टी प्रैक्टिस क्या है। जो सप्लायर, कस्टमर सप्लायर जो ऑडिट होता है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड पार्टी ऑडिट और सप्लायर ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑडिट, जहां पे थर्ड पार्टी कोई इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बॉडी जो एक्रेडिटेड है, वो जाके जब ऑडिट करेगा, दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेशन बॉडी, मींस सर्टिफिकेशन ऑडिट, थर्ड पार्टी जो ऑडिट करके आपको सर्टिफिकेशन दे सकता है। ISO 9001
यू आर अप्रोच फॉर द सर्टिफिकेशन बॉडी। तो उसका कोड वाइज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो ऑडिटर जाके आपको ऑडिट करके सेटिस्फाई होने के बाद आपको सर्टिफाई करता है। दैट इज कॉल्ड द थर्ड पार्टी ऑडिट। नाउ प्रोसेस फॉर ऑडिटिंग, इनपुट कोई भी प्रोसेस, नॉट एन ऑडिटिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में देयर आर मिनिमम 3 क्राइटेरिया: इनपुट, एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। सो इनपुट में क्या है कि ऑडिट प्रोसेस में ऑडिट क्राइटेरिया मींस अगेंस्ट व्हिच, किसको फुलफिल करना है, व्हिच इज द ऑडिट क्राइटेरिया मींस स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना है, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट क्राइटेरिया। एंड ऑडिट एविडेंस, किस बेसिस पे, किस चेक, किसको फुलफिल करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा ऑडिट को। से मेरा स्टेज 1 ऑडिट हो सकता है, स्टेज 2 ऑडिट होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट हो सकता है, सर्वेलेंस 1 हो सकता है, सर्वेलेंस 2 हो सकता है, रिसर्टिफिकेशन हो सकता है। दोस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, उसको फुलफिल करना है, इसका इनपुट, उसका प्रोटोकॉल। नाउ ऑडिट एक्टिविटीज में इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन मतलब प्रोसेस, जो ऑडिट का प्रोसेस अगेंस्ट द ऑडिट क्राइटेरिया, दिस कॉल्ड द इवैल्यूएशन। आउटपुट में क्या है कि ऑडिट फाइंडिंग्स और रिपोर्टिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्राइटेरिया जैसे हम लोग क्या बोले कि आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएमएस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट पॉलिसीज, कस्टमर इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स को दैट है, दोस आर द ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फुलफिल द ऑडिट क्राइटेरिया ऑफ कोर्स। क्या किस हिसाब से? कॉन्फॉर्मिटी, हमको कॉन्फॉर्मिटी करना है कि इस स्टैंडर्ड को हम लोग कॉन्फर्म किए, कॉन्फॉर्मिटी स्टैंडर्ड, कैपेबिलिटी, effectiveness and improvement, those are the audit objectives. Yes, audit evidence triangle, ऑडिट आप क्या है कि अगेंस्ट द क्राइटेरिया हम लोग को तो ऑडिट एविडेंस लेना होगा फुलफिल करने का टाइम, ऑडिट करने का टाइम। किस हिसाब से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं? बाय साइट, आंखों देख के। ऐसा नहीं कि जो क्लॉज में लिखा हुआ है हम जाकर पूछने लगेंगे उसको, मेरा आंख कान भी खुला रखना होगा। सो बाय साइट मेरा सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, उसका वर्क प्रैक्टिस कैसा है, नहीं है, ठीक है। तो बाय साइट भी हम लोग ऑडिटेंस कलेक्ट कर सकते हैं। बाय साउंड, हम किसी को ऑडिट कर रहे हैं, पीछे कोई साउंड आ रहा है, तो ऑडिट दूसरा टाइप का आवाज दे रहे हैं, दैट इज द बाय साउंड। हमको उसका सराउंडिंग को जांच करने के लिए बाय साउंड भी हम लोग को जांच करना है। एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन एक सेट क्राइटेरिया हम लोग को डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन। यस, ऑडिट प्रोग्राम, यस ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में जो हम लोग शेड्यूल करके ऑडिट को क्लाइंट को भेजना है। नाउ पैरामीटर्स फॉर ऑडिटिंग क्या है? स्कोप, स्कोप ऑफ द ऑडिट। स्कोप मतलब what are the boundaries of the audit, the whole organization, part of the organization, scope, कहाँ पे हम लोग ऑडिट करें, this is the scope of the audit. Now objectives of the audit जो हम डिस्कस किए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्या फुलफिल करेंगे ऑब्जेक्टिव, दिस कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। एंड क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया में हम लोग फुलफिल करना है, बेसिकली पैरामीटर्स फॉर ऑडिट, क्या स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया। टाइपिकल ऑडिट एक्टिविटीज किस हिसाब से होता है ऑडिट का, जस्ट एक एग्जांपल दिखाया गया है किस वे में हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। से इनिशिएटिंग द ऑडिट, पहले हम लोग एज पर 19011 जो स्टैंडर्ड है उसी का ही फ्लो है, इनिशिएट करना है पहले क्लाइंट को, इनिशिएटिंग द ऑडिट, प्रिपेयर द ऑडिट एक्टिविटीज, conduct the audit activities and preparing and distributing the audit report and completing the audit, conducting follow-up audit if required. This is the flow of the typical audit activities. Now, auditors' responsibilities. टाइम कीपिंग, टाइम में ही ऑडिट खत्म करना है, टाइम को बाहर नहीं, इन्फॉर्म ऑडिटी ऑफ ऑडिट प्रोसेसेस, ऑडिट प्रोसेस के बारे में जानकारी देना होगा। ऑब्जेक्टिव एंड एथिकल, ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑब्जेक्टिव जब फुलफिल करना है, एंड एथिकल रखना है। सेफगार्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स, कीप ऑडिटिंग इन्फॉर्म्ड,
हम ऐसा नहीं कि उसको लिख के लेके चले गए, उसको इन्फॉर्म करना ही हमको लेना होगा, कॉन्फिडेंशियली आपको रखना है, हम दूसरे किसी को बोल नहीं सकते उसके इन्फॉर्मेशन। सपोर्ट द ऑडिट टीम, टीम मेंबर दूसरा कोई है तो सपोर्ट करना है आपको। डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट फाइंडिंग्स एंड प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट with work document. These are the auditor's responsibilities. Now, initiating the audit. Establish initial contact. Auditor को पहले से contact करना है, किस way में करेंगे और plan देना है उसको, कौन कौन जाएगा उसका nature में बोलना है. That is the initiating the audit. Establishing initial contact, determine the feasibility. पहले से हमको feasibility देखना होगा, हम नेट से कलेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका लीगल प्रोविजन क्या है। ऑडिट से पहले से हम लोग उसका मैनुअल्स, उसका प्रोसीड्यूर्स भी ले सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द देयर प्रोसेसेस। ओके, सो इनिशिएटिंग द डिटरमाइन द फीजिबिलिटी। नाउ डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू बेसिकली किस किस हिसाब से कर सकते हैं, उसका कुछ मैनुअल से उसको देख सकते हैं, ऑडिट प्रायोरिटीज टॉप मैनेजमेंट का कुछ फोकस एरिया है उसको हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम में कर सकते हैं, कस्टमर कॉम्प्लेंस, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, थर्ड पार्टी कुछ है वो हम लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है, पहले करेक्टिव एक्शन स्टेटस क्या है, रिजल्ट का डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हैं उसका। ऑडिट प्लान एग्जैक्टली कौन, डेट, टाइमिंग, शेड्यूलिंग, फंक्शन वाइज, ऑडिटी, ऑडिटर, those are the under the audit plan. This is the demo of the audit plan. अभी सैंपल करना है। सैंपल मीन्स किस हिसाब से करना है, इससे 3 साइट है, हम 2 साइट को किए, एक साइट में किए, पैरेलली किए, हॉरिजॉन्टली किए, दिस इज कॉल्ड द ऑडिट सैंपलिंग का। हम लोग तो पूरा सब फंक्शन तो कवर नहीं कर सकते और पूरा एरिया, दिस इज द टेस्ट द प्रोसेस थ्रू यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड रैंडम सैंपल्स। रैंडम बेसिस में हम लोग सैंपल लेना है। Okay, this is called the sampling process. Now, audit work documents, preparing audit checklist से ISO 9001 ordinal कोई भी स्टैंडर्ड है, उसका अपना क्लॉज वाइज हम लोग पहले शैल का बाद जो हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, शैल का बाद जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑडिटेबल इन ए सिंगल पार्ट। ओके, तो शैल का बाद जो रिपोर्ट माने जो रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से 5W1H लगा के हम लोग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द ऑडिट चेकलिस्ट। इस हिसाब से वर्क डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। चेकलिस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे बोलते हम लोग 5W1H, तो अगेंस्ट शैल का बाद जो रिक्वायरमेंट है उसका अगेंस्ट में उसका पहले आप 5W1H लगा के आप लोग स्पेसिफिकली ऑडिट चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ ऑडिट वर्क डॉक्यूमेंट एग्जांपल स्ट्रक्चर देखा गया है। से रिक्वायरमेंट, प्रोसेस रिक्वायरमेंट, ISO 9001 रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट, source, what to look at, evidence, what to look for, notes, note of how to follow up, what to follow up now. So in such a way, requirement, source, evidence, notes, one by one करके वर्क डॉक्यूमेंट बना सकता है। स्ट्रक्चर मतलब चेकलिस्ट, वही है चेकलिस्ट का एग्जांपल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस हिसाब से होगा ऑडिट का जो, यस, कम्युनिकेशन मींस ask the right person, सही पर्सन चूज करो। टॉप मैनेजमेंट ऑडिट करना है तो आप टॉप मैनेजमेंट का ही करो, शॉप फ्लोर में करना है शॉप फ्लोर पीपल को ही, वर्कर को पकड़ो, राइट, ask the right person, ask close ended questions, take observative notes, keep the auditee informed, argue मत करो, give the auditee time to answer, say understand when you don't, stay impartial, ask tricky questions, don't ask tricky questions, ensure questions are very much clear to auditing, ask one question at a time, criticize, don't criticize others in the communication phase at the time of audit.
नाउ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बॉस नहीं बनना है, हम लोग का मोटो क्या है, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो इन फॉर्मल वे आपको ऑडिट करना है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए किस वे में बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा आपका एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चंस, किस वे में हम लोग को क्वेश्चन करना होगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग करने के बाद यस और नो में आंसर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो हम लोग को क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में काल्पनिक टाइप का, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते, अगर आप राष्ट्रपति होते तो क्या करते, आप अगर पृथ्वी अर्थ का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन होता तो क्या करते, तो हम लोग को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं करना। प्रूविंग क्वेश्चंस वो भी हम लोग को नहीं करना, प्रूव करने का क्वेश्चन वन बाय वन वो भी नहीं करना। वी हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। What is, what type of methodology you are following? What is your process? Kindly define your process. Open-ended question करना है ऑडिट को, so that we can हम लोग को अच्छे से ऑडिट एविडेंस मिल पाए। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव वे में हमको समझे। ओपन-एंडेड क्वेश्चन ही हम लोग को करना है टाइम ऑफ ऑडिटिंग। वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, किसी से क्या क्या वेरीफाइंग करना होगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग बाय एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग एंड वेरीफाइंग, evaluating it against audit criteria, audit findings, audit conclusion. Verify information. Yeah, records of facts and objective evidence for investigation now or investigation later must be listened, must be retrievable. Okay. In such a way, we have to collect the audit evidences. सेम एक फंक्शन ऑडिट करने के लिए भी है, तो उसको इन्वेस्ट करने के बाद दूसरे फंक्शन का कोरिलेट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन लेटर। कोई भी रिकॉर्ड दैट मस्ट बी लिजिबल, दिखना चाहिए उसको, लिजिबल मस्ट बी रिट्रीवेबल, रिट्रीव कर सकते हैं सही टाइम में। उसको कोई पूछ रहा है, सही फाइल वो निकाल रहा है, सही रिकॉर्ड हमको पेश कर रहा है, मस्ट बी रिट्रीवेबल, सही से रिट्रीव कर पा रहा है। नॉन कन्फर्मिटीज बेसिकली ऑडिट लैंग्वेज में ही कहा जाता है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। सो नॉन कन्फर्मिटी इज बेसिकली नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन KMS जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, वैसे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज बेसिकली नॉन कन्फर्मिटीज। नाउ डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन किस हिसाब से कर सकते हैं। यस, दिस इज द फ्लो, RED, रिक्वायरमेंट एविडेंस डेफिशिएंसी। जो रिक्वायरमेंट मींस ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस हम लोग कलेक्ट करें क्या है कि बाय साइट, बाय ईयर एंड बाय डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। Yes, now is there any deficiency that to be reported? This is the, when writing the NCs, remember ABC means accuracy, brevity, clarity. Okay, now हम आपको एग्जांपल देखना चाहेंगे। से एक सिचुएशन हम लोग क्रिएट किए कि इस हिसाब से ऑडिट होता है। ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑफ द डिजाइन डिपार्टमेंट, द ऑडिटर आस्क्स द डिजाइन मैनेजर what documented information is retained especially on the action against prevent adverse impacts. The manager replies that the designers were very experienced and had no need to keep this information. None are found by the auditor. कुछ नहीं मिला। Then ऑडिटर क्या करेगा? नाउ आप देखिए, जस्ट एक सैंपल दिखा रहा है आपको। ISO 9000/2015 clause number 8.3.6D requires documented information of the actions taken to prevent the adverse impacts to be retained. Retain मतलब रिकॉर्ड रखना होगा उसको। The design manager stated that designers did not need to keep this and none are found by the auditor. Non-conformity क्या है? As documented information on the actions taken to prevent adverse impact is not retained, वो नहीं रखा है। So that is the NCs against 8.3.6.8 clauses. Okay. Now
another one situation. During an audit of the QA department, the auditor notes that the audit program requires that each department is audited every 6 months. Okay, 6 months में करना है. When asked, the quality manager says that this frequency was decided on some 4 years ago and has remained the same since ever since. तब से वही मेंटेन हो रहा है. The auditor notes that the purchasing department has had 30 audits, non-conformities raised over the past 2 years. Previous years, very much less, spread equally over the 2 years. Other departments had between 1 and 5 non-conformities over the same period. So क्या है कि purchasing department काफी सारा इनसे आया था over the past 2 years. Okay, बाकी में थोड़ा कम. ये सिनेरियो है. Now, उसमें क्या किस वे में उसको नॉन कन्फर्मिटी है? This is the statement. ISO 9000 or 2015 clause number 9.2.2.a requires that the audit program take into consideration the results of previous audit. ऑडिट प्रोग्राम हम लोग किस हिसाब से करना है कि प्रीवियस ऑडिट का स्थिति है उसको देखते हमको ऑडिट प्रोग्राम करना है. The audit program was not changed for last 4 years, even though there are differences in the level of audit non-conformities in the various departments. For example, the existence of 30 non-conformities of purchasing when previous years were much less, but a maximum of 5 in other departments over the past 2 years. Non-conformity because the audit program has not taken into consideration the results of previous. This is the NCR statement. So in such a way, we can conduct the third-party internal audit auditing. Okay, this is the practice of auditing. किस way में हम लोग plan कर सकते हैं, what criteria किसको कहते हैं, objective कैसे fulfill होता है, किस हिसाब से हम लोग reporting कर सकते हैं. ये short phase हम लोग इसी को discussion किए. For more details, you can go through our website www.managementsystemconsultancy.com. My email ID is also been there. And वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग दूसरे किसी को अगर नॉलेज गेन चाहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए फॉर प्रमोशनल पर्पस. तो थैंक्स फॉर द टाइम बीइंग. हम लोग बाद में और वीडियो लेके आएंगे.